हाय फ्रेंड्स, मैं एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम टॉप टेक कंपनीज के इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे। आई इंसिस्ट यू डोंट मिस एनी ऑफ द वीडियो ऑफ दिस सीरीज। आपके प्लेसमेंट जर्नी में ये वीडियोस आपके काम आएंगे। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट चैनल के बारे में डेली अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So first of all, pause this video and try to give answer for each question. अगर आप दे पा रहे हो तो यू आर गुड टू गो फॉर इंटरव्यू, और जो लोग नहीं दे पा रहे हैं जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो। आई एम गिविंग आंसर ऑफ ईच ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस which is what are wrapper classes in Java? Wrapper classes provide object representation of a primitive data types such as integer, double, boolean. These classes allow primitives to be used in a collections and provide useful utility methods. I hope this is clear. Next question. Why Java is platform independent? I hope इसका आंसर सबको पता होगा। जब हम हमारा प्रोग्राम रन करते हैं तब वो प्रोग्राम पहले बाइट कोड में कन्वर्ट होता है और ये कोड JVM पे रन होता है। ओके, सो इसका आंसर आपको ऐसे देना है। Java achieves platform independence through the bytecode. Java compiler compiles the code and convert it into a bytecode which JVM interprets from the underlying operating system. Okay, coming to the next question, which is local and the global variables in Java. Local variables are declared inside the method or a block and are accessible within only a specific scope. And the global variables. Global variable are also known as an instance variable. These are declared within a class but outside any method or a block. It has a wide scope. Okay. Next question is, what do you mean by a singleton class? Singleton class ensures that only one instance of a class exists throughout the application lifecycle, which can be implemented using a private constructor, static instance variable, and a public static method that returns a single instance. Does every try block need a catch block? This is not mandatory thing. हर एक ट्राई ब्लॉक को कैच ही ब्लॉक चाहिए ऐसा नहीं है। ट्राई के नीचे हम कैच भी दे सकते हैं और फाइनली भी दे सकते हैं। इन दोनों में से आइदर कोई भी चलेगा। कैच इज ऑल्सो फाइन और फाइनली इज ऑल्सो फाइन। व्हाट इज द यूज ऑफ सुपर कीवर्ड इन जावा? सुपर कीवर्ड इज यूज टू रेफर द parent class. Super class can be used to call a constructor of parent class, and also it is used to call the parent class methods and variables. How is exception handled in Java? Exceptions are handled by using try, catch, and finally mechanism. Try block. Try block contains a code that might generate an exception, followed by catch block. This block handles an exception and define what should be done when error occurs. And a finally block. It executes every time whether exception occurs or not. It is mostly used for a cleanup purpose. How can objects in a class to be prevented from the serialization? What is serialization? Serialization is a process of converting an object into a stream of bytes. अगर हमें उसे stream of bytes में convert नहीं करना है तो उस ऑब्जेक्ट के आगे हम ट्रांजिएंट कीवर्ड लगा देंगे, उससे वो ऑब्जेक्ट कभी भी बाइट्स में कन्वर्ट नहीं होगा। Why is reflection used in Java? Reflection in Java allows a runtime program to inspect and manipulate its method, field, and constructor at a runtime, even if it is a private, which means that we can access the private methods at the runtime. This is reflection in Java. What is copy constructor? Copy constructor creates a new object by copying a properties of an existing object. It takes an instance of same class as an argument and initialize a new object with the same values. I hope these questions are helpful to you. If you want a mock interview, I'm pasting one link. You can schedule one call with me. I hope this video is helpful to you in your interview preparation. So please like, share and subscribe to this channel. Thank you so much.